I am ever indebted to Kudumbashree that has helped me in my journey from darkness to light. With my little practical knowledge and interest in Ayurvedic products, together with hand-holding support of Kudumbashree State and District Mission, today I have 21 different products made out of Brahmi. They are Brahmi food, Brahmi jam, Brahmi syrup, Brahmi oil, face pack, hair wash powder, hair tone and other herbal products. All of them are 100% natural products. I am extremely indebted to Kudumbashree for traveling with all these smile and help me to achieve this award, and ever thankful to FICCI fellow selecting me. Thank you. Our next awardee is Miss Lata Gauri, but she hasn't come today. So I'll just introduce her, but we won't be giving out the award. Lata Gauri was studying in class 7 at the time she got married. She was subjected to harassment for failing to bring a fat dowry. After giving birth to her first baby, Lata returned to her parents' place. Lata's father supported her and encouraged her to go to school once again, and she studied up to intermediate. Then from a self-help group in the village, she bought a sewing machine. After repaying the loan, she took a loan of 3,000 rupees. After repaying the loan, she borrowed 78,000 and then 58,000 to augment her business. After that, she was selected as a community news reporter and was trained in news reporting in Hyderabad. She was felicitated by TV South Asia Television and got a fellowship award. She also visited an African country on the invitation of South Asia TV, and she actually spoke at a meeting in the presence of the Secretary General of the United Nations Organization. Unfortunately, she is not here today. She also currently makes educational videos to encourage women to become literate. I would now like to invite Anusuya Khopade on stage. The women of Nazare village address Anusuya Khopade as Mutiyai, elder mother. There is a good reason for it. She played a crucial role in mobilizing women from her village to form SHGs, inspiring them to come together despite huge social odds. It all began after Anusuya's husband took early retirement due to health problems. The couple, after 15 years in Mumbai, decided to return to the village. In 1996, Anusuya convinced 20 women to form the Jai Bhavani Mahila Bachat Kat, the village's first self-help group. So the women were feared that their husbands would not like it. So we did not let anyone know about our meetings for almost a year, recalls Anusuya. It has been an extremely successful group, and now there are 9 other groups in the village seeing the success of her group. The total turnover of Anusuya's group exceeds 12 lakhs. The group has taken 13 loans in the last 15 years, mostly used for children's education and agriculture. All the members now own cows, and selling milk augments their income. The group also does collective income generating activities like stitching school uniforms and making agarbattis. In 2002, Anusuya's group was deemed the best group in Pune district and was felicitated in a public program. But most importantly, involvement in SHGs has changed gender perceptions of Nazare society and improved women's status within the community. अनुसुया जी 2 शब्द कहेंगे? माझं मराठी आहे. मराठी. माझं नाव अनुसया शंकरराव खोपडे, मुक्काम पोस्ट नाझरे, तालुका बोर, जिल्हा पुणे. मी बचत गट चालू केला, जिद्दीने चालू केला. आमच्या गावात काय करून देत नव्हते, पण म्हटलं मरू दे, असंच मागं राहत चालले. आपलं आता पुढं काढलंय नाही एमआयसीपीने, पुढं जायचं म्हणून मी गट चालू केला. रात्रीचा चालू केला. 1 महिनाभर 10,000 रुपये काढले, ते ठेवून दिले. 1 महिन्याच्या नंतर साहेब आले, 10 रुपये असे करून
प्रत्येक महिन्याला काढल्याचे 3 महिने पैसे माझ्याजवळच ठेवले. तोपर्यंत काही साहेब माझ्याकडं आले नाहीत. पैसे लोकांना परत द्यायला म्हणजे असू द्या, तुम्ही काय खाणार नाही, कुठे पैसे आपले जाणार नाहीत, करायची ना जिद्द लागली तुमची. म्हणून मला सगळ्या माझ्या गावात माझ्या सासऱ्यांनी लहान लहान होती म्हणून माझं नाव मोठी आई पडलेलं आहे. मला ते म्हणायचे अण्णा की मोठी आई म्हणायच्या, त्याच्यावरती माझं आपलं सगळं चालायचं. म्हणून ते मला म्हणायच्या नकोच, पैसे घ्यायचेच नाहीत, मोठे आई काय खाणार नाही काय नाही. म्हणून अशा जिद्दीने मी गट चालू केला. तर गावात 1 वर्षभर आपलं रात्रीचं चालू केलं. रात्रभर पैसे जमा करायचे, पैसे न्यायचे बँकेत भरायचे, आपले दुसऱ्याचे जाऊन नंतर आपलं हे करायचे. असं करून बचत गट चालू केला. आणि आता गावात आमच्या 10 बचत गट आपल्या ह्याचे झालेले आहेत जिद्दीने. जास्त काय आता बोलत नाही, एवढं बोलून पूर्ण करते. जय हिंद, जय. मेरा नाम अनुसया खोपड़े है. मैं तो मैंने विलेज में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में रात में ही चलाती थी. रात में ही महिला आकर वहां पर इकट्ठा होकर अमाउंट मेरे पास देकर जाती थी. 3 महीने तक कोई ऑफिसर नहीं आया था अमाउंट कलेक्ट करने के लिए. तो 3 महीने के बाद सबने जो कलेक्ट किया था वो मैंने ऑफिसर लोग को दिया. अभी हमारे गांव में 20 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप है और मेरा अगरबत्ती का बिजनेस है. S. Narayanamma. S. Narayanamma was born in Neetuvarupalam village in district Anantapur, Andhra Pradesh. Her parents used to tend milch animals. Even a square meal a day was difficult. My brother and I did manual stone breaking work for rupees 20 a day. We used to find work for just 10 days a month, she recalls. At 16, Narayanamma got married, but her husband died 5 months later. Thrown out by her in-laws, she landed into deeper trouble. Her husband had borrowed 10,000 rupees, and for 3 years she had to work as a bonded laborer to repay that 10,000 rupees. Then she went back to her parents' house. She was at home crying when village self-help group women met her. She took their counsel. Narayanamma borrowed 10,000 rupees and purchased a milch animal. Earning rupees 200 a day, she recalls, I repaid the loan in 15 months. Narayanamma took another loan and established a leather business. It fetched her 1,500 rupees a month. Today, she has 6 milch animals. Her leather business is reaping good returns. Her assets are currently rupees 9 lakhs. And the woman who once cried is now a passionate trainer for other women. మీ అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు ఎస్ నారాయణమ్మ, అనంతపురం జిల్లా, బత్తరపల్లి మండలము. మా ఊరు నేతివారంపల్లి. అయినా ఈ సంఘాలు చేరుకొని నేను అప్పుడు చాలా పేదరికం ఉంటే సంఘాలు చేరుకొని నేను ఇప్పుడు చిన్నప్పులు పెద్దప్పులు తీసుకొని నేను అభివృద్ధి అయినాను. ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు లేకపోయినా నా భర్త చిన్నప్పుడే చనిపోయినాడు. చిన్నప్పులు తీసుకొని నేను నాకు పిల్లలు లేకపోతే పిల్లల్ని చదివించుకుంటూ చిన్నప్పులు ఇంట్లో టోర్ బియ్యం తెచ్చుకుంటూ నేను పేదరికంలో ఉండి పైసాకి ఎక్కాలంటే పెద్ద అప్పులు తీసుకొని పాలు, పెరుగు, ఆవులు, బర్రెలు, మళ్ళీ 4 తులాలు బంగారు కనుక తీసుకుంటా డాక్రా గ్రూప్లో తీసుకున్న తర్వాత నేను బంగారు ఉంటే ఏంటికి నాకు
ఉపయోగం అవుతుందని చెప్పి నేను అమ్మి ఆ బర్రెలు ఆ ఆస్తి అమ్మి నేను టౌన్లో 5 సెంట్లు స్థలం తీసుకుంటా. 5 సెంట్లు స్థలం తీసుకొని డాగ్రా గ్రూపులోనే మళ్ళాగా 1,50,000 ఎత్తుకొని నేను ఇల్లు కట్టించుకొని నేను ధైర్యంగా బతుకుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. ఐఎమ్ ఎస్ సత్యనారాయణమ్మ, బిలాంగింగ్ టు దళిత్ కమ్యూనిటీ. I live in a small village in Andhra Pradesh. I am very poor woman, joined in self-help group. I take small loan from SHG, started fruit vending and sending vegetables. At the same time, I bought cows and buffaloes. I used to sell milk and curds in the village. Today, I am able to take decisions on my own. I never allow others to take decisions on behalf of me. I used multiple strategies to come up in life. I am very thankful to get this award. She don't have children. She adopted one son from brother's son. She adopted. Anuradha K. Pegu. With her family over generations, having acquired expertise in traditional hand-weaving techniques, Anuradha, since her childhood, took a special interest in the art of weaving. 42-year-old Anuradha was a housewife before starting her enterprise. She used to weave her own clothes, which generated appreciation, thus motivating her to start her own venture in course of time. While initially she worked from home, later she arranged for seed funding through bank loans and her own savings to lease land and set up her own factory. Further, with support from her husband and members of the Crafts Council of India, she has not only been able to scale up her venture, Naturally Anuradha, but has also been able to give employment to others. Her aim is to preserve the traditional designs of Mishing community, which are colorful, gorgeous and unique. In 2007, Anuradha was felicitated with the National Merit Award 2007 and in 2008 with the National Award in recognition of her outstanding work as a grassroots entrepreneur. We have members in the audience who are wearing saris by her. Can they please stand up and show? थैंक यू फिकी, थैंक यू मोनिसा भाई अवार्ड देने के लिए. Thank you, Anuradha ji, and for your beautiful saris. Afsana is from the village Ghosiana in Raebareli, Uttar Pradesh. She has a family of 6. Her husband was a laborer whose monthly earnings amounted to rupees 2,000. She had no formal education. Then came a time in her life when her family was passing through tough times. She had taken a loan to work her agricultural land. She was in a debt spiral and her family were almost destitute. But she joined a self-help group in her village and took her first loan of rupees 20,000, started a business of supplying dairy products and milk to locals, earning 100 rupees a day. Soon her business began to show potential for expanding. Instead of being content with the amount she was earning, she took a further loan of 1,50,000 in 3 installments and a further 1,20,000. Today, she supplies 120 liters of milk daily and earns 75,000 rupees a month. All the loans have been repaid. Afsana is an entrepreneur worth emulating.
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं अपनी राजीव गांधी परियोजना की तरफ से हमारी आई हुई मैडमों को मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी में थी कि जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी, पूरा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए टाइम दिया गया है, लेकिन मैं बताऊंगी। मेरे पति पहले 2000 रुपए में नौकरी करते थे, तो हम लोगों के बीच बहुत झगड़े होते थे और मेरे परिवार में अधिक परेशान किया जाता था मुझे। लेकिन मैं इस राजीव गांधी परियोजना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो कि हम लोगों की ये नई जिंदगी मिली है, तो वो राजीव गांधी परियोजना से मिली है। और आज हम लोगों ने अपने समूह से लेन देन करके आज मेरे पास खुद करीब 6 लाख का बिजनेस है। और मेरे पति जहां पे नौकरी करते थे 2000 रुपए की, मैंने उनकी ही डेयरी खरीद ली और मैं बहुत ही खुशहाल हूँ। और जो मेरे पति के बीच में हमसे झगड़े होते थे, वो अब झगड़े भी नहीं होते हैं और हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। जब मुझे दिल्ली आना हुआ तो जितनी ज्यादा मैं नहीं खुश थी, उससे ज्यादा मेरे पति खुश थे। पूरे मोहल्ले में बताया कि मेरी पत्नी दिल्ली जा रही है अवार्ड लेने के लिए। इसलिए मैं राजीव गांधी परियोजना से मुझे नई जिंदगी मिली है, मैं इसको कायम रखना चाहती हूँ और कायम रखूंगी और मैं बहुत खुशहाल हूँ इससे। एक्चुअली इसको कहते हैं उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना कि जिसके यहाँ उसका हस्बैंड काम करता था उसकी डेयरी खरीद ली। Janki Ben. Going to bed hungry was a regular affair for Janki Ben when she was growing up in Ahmedabad. But things changed when she started taking lessons on how to make khakra as a class 7 student. This gave her enough money to pay for her brothers and her own education. When in class 12, she came third in the board. Soon after she got married, she started making khakras at home. Her husband ran a cycle repair shop which was not doing too well. She started a production center at a small place with her husband and nephew joining her. Today, she has trained over 12 women and primarily supplies to wholesalers. She gives a salary of rupees 60,000 a month to her workers and makes a profit of rupees 25,000 monthly. As of now, the property where she works is non-commercial. She is hoping to legalize it and make it commercial. नमस्कार। मैं पहले तो बहुत ही खुश हूँ और मुझे ये FICCI ने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड प्रदान किया, मैं उसके शुक्रगुजार हूँ। फिर मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊँगी। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी और 7वीं कक्षा के बाद ही मेरे को पता चला कि मेरे घर में कुछ खाना भी नहीं था, सिर्फ रोटी और चाय में हम लोग खा के बड़े हुए हैं। और मेरे पापा की तनख्वाह सिर्फ 500 रुपया थी। उसमें हमारी बहुत ही सपना जुड़ा हुआ था। मेरे पापा और मेरी मम्मी का सपना था कि मेरी लड़की आगे पढ़े और आगे पढ़कर वो उसका नाम करे, पर नसीब संजोग ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे पापा की ख्वाहिश ही रह गई। और फिर मैं मम्मी के सलाह के सूचन और उसको साथ देते हुए मैंने अपना खाखरा का काम शुरू किया। मैं पहले बनाने के लिए सीखने के लिए गई और उस साथ सपोर्ट के सहारे से मैं 1 कलाक का सिर्फ 1 रुपया में मैं अपना काम कर रही थी, यानी 10 घंटे का 10 रुपया मुझे मिल रहा था। उससे मैं बहुत ही खुश थी। वो 10 रुपया लेके भी मैं अपना घर चला रही थी। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की, सिर्फ 12 तक मैंने पढ़ी। कॉलेज पढ़ने की ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश ही रह गई। और मेरे पापा ने बोला कि नहीं बेटे, अब मेरी ताकत नहीं है पढ़ाने की, तुम पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते तो मेरी ताकत नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मेरी शादी हो गई
यानी 18 साल में मेरी शादी हो गई और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे साथ सपोर्ट दिया और उसके साथ सपोर्ट के साथ उसने मेरा खुद का बिजनेस था साइकिल रिपेयरिंग करने का। फिर मैंने सोचा कि साइकिल रिपेयरिंग करते हुए यानी हमारे घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों का खाना नहीं निकल सकता, यानी कि आप समझ सकते हो कि आज छोटे बच्चे को भी वो यो बाइक चाहिए, साइकिल अब कोई भी नहीं चला सकता। तो ये सोच के हमने साथ लेकर खुद का एक बिजनेस शुरू किया और मेरे हस्बैंड के साथ सपोर्ट और अनार दीदी के साथ सपोर्ट क्राफ्टवुड का प्लेटफॉर्म उसने मुझे दिया और वन्ना दीदी ने मेरी स्टोरी लिखी और ये स्टोरी के साथ मुझे FICCI ने मुझे ये अवार्ड प्रदान किया, इसलिए मैं इसके बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। Just one more. Jamna. Jamna's is a story of resilience and success. She runs her business from a 15-foot by 15-foot house in Sultanpuri, a low-income urban colony in New Delhi. Her occupation list is impressive. She runs a small grocery store, does tailoring work, and adds finishing touches to wholesale bought clothing material, which she further sells to local markets. 10 years ago, she started her tailoring business with a modest outreach. Slowly, with time, her husband and she started a second business of wholesale clothing. To meet this need, they took a loan from the Jeevan Group. Since then, they've taken 4 more loans. Now she has taken a home improvement loan with 4 kids and a growing wholesale business. The construction cost her 2,40,000, of which Ujjivan gave half, and the rest came from her own savings, which she had accumulated from over years from her business. मेरा नाम जमुना है, मैं सुल्तानपुरी की रहने वाली हूँ, दिल्ली की। हिम्मत से बोलो। मैं उज्जीवन से 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी। उन्होंने 8,000 के लोन से शुरू करा। फिर मैं धीरे धीरे मैंने कपड़ों का काम शुरू करा, दुकान खोली घर में किराना की और सिलाई भी करती रही। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ती रही और अब मैं 1 लाख तक का काम है मेरे पास और अब मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ जीवन से, उज्जीवन की मदद से, और उज्जीवन ने बहुत साथ दिया। After hearing, I just want to say that as you have seen, each story has touched the heart, and we went through 180 stories to take 150 stories up about. And my request is here today, when I was here, is that to request to each chapter to please, when you do a program and there are people in your state from this book only, you can call them and felicitate. You see today how beautifully they've come forth and they've come here, and I think we should honor them and we should be proud of what they have done. And you want to come here? Or you want to come? Yeah. Yeah. We'll do that definitely. We will do that definitely. We'll work that out. मुझे 2 बजे भी बोलना नहीं, आप वहाँ पर तो चेंज अप कर रहे हो, यहाँ पर आप बोलिए, ये बेटर रहेगा। I will now like to request Najma ji to address the audience. Okay, but she's not. This. Sure. Oh, this. Okay. Okay, पर मैं सब बीच-बीच में कुछ लिखा हुआ है। पहले एक बात पूछूं, हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं?
अंग्रेजी में बोलती हूँ तो आई स्पीक फ्रॉम माई माइंड, पर जब हिंदी में बोलती हूँ तो दिल से बोलती हूँ, दिल से बोलूं और मिक्स बोलूं, क्योंकि थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लूं। यहाँ इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स महिलाएं बैठी हैं तो थोड़ा दिमाग का तो बोलना ही पड़ेगा। हिंदी में बोले? अच्छा, मराठी गुजराती भी नहीं? मला येते मराठी, मी महाराष्ट्राची सूनबाई और गुजरातनी वहू छू। आज इतना अच्छा प्रोग्राम करा आप लोगों ने। मुझे जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने किताब दी मुझे, ये 150 महिलाओं की सक्सेस स्टोरी। तो मैंने पढ़ा उनको। अब मुझे लगा कि शायद हम जैसे लोग, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जो सत्ता में बैठी हूँ थी, इतने बरसों से हूँ पार्लियामेंट में, मुझे उस किताब से, उनकी जिंदगी से सीखना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी सत्ता आई थी एक कुर्सी की वजह से। ठीक है, हम सब लोग मेहनत करते हैं उस जगह को पाने के लिए, सबने मेहनत की। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं परिश्रम करके आए हैं। जिंदगी में हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत करना ही पड़ती है। मगर कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट एट सम लेवल मिली। सबसे पहली सपोर्ट मिली कि हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, अक्षर पहचानना सिखा दिया। उनके पास साधन थे तो हम लोग पढ़ लिख गए। और पढ़ने लिखने से, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसमें बड़े कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, ये चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ने का मौका दिया। यहाँ मौलाना साहब का जिक्र हुआ, मैं उनके बारे में एक बात कहूंगी। वो देश के पहले प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैंने इंटरमीडिएट के बाद उन्हें चिट्ठी लिखी कि मुझे मेडिकल में जाना है। डॉक्टर तो अभी भी लिखा हुआ है, पर वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या साइंस है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी आवाम की और देश की खिदमत के लिए रिजर्व करना पड़ेगी, वक्फ करना पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम शादी के बाद अपने काम को छोड़ दोगी तो मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी होगी उस शख्स के लिए कि जो तुम्हारी जगह पढ़ के डॉक्टर बन सकता। ये उस जमाने के वैल्यूज थी कि उनकी फेवरेट ग्रैंडनीज के लिए वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इत्तेफाक से मेरी, आई वॉज अंडर एज,